Hello everyone, I am Dr. Amima Shweb, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management. Today I'll be discussing with you one of the new management terminology, or you can basically call it a daily life terminology, that is analysis paralysis. What happens in a situation wherein, be it in our professional life, be it in a corporate life, be it in a personal life, there comes a choice, there comes a situation wherein we have lot many choices. When we have lot many choices, we get stuck into a situation wherein we are unable to go ahead into a proper decision making. What exactly is analysis paralysis? It can be a situation, it can be a condition wherein over analyzing and overthinking can lead to a situation of paralysis. As in, we get engrossed into a situation, we get stuck into a situation जहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं जब हमारे पास बहुत सारे choices होते हैं. What happens with plethora of options available at our disposal? No doubts, human tend to achieve better results. But at the same time, what happens? These lot many choices tend to drag us into a situation wherein it leads to indecision, dissatisfaction, anxiety, as well as mental paralysis. Rather than paving the right way for decision and making ability, the abundance of virtual information often generates a situation of incorrect decision making. Then what happens if you see the example on the screen? There are lot many options available, but it's easy peasy. Yes, we can enjoy, we can decide on which options to move ahead, but eventually as we move ahead, we have lot many options available. Here comes a situation when an individual gets paralyzed, mental paralysis, wherein we are unable to decide which options to go. This is the situation wherein the happiness that needs to go high, that needs to rise up, leads to a downfall because of lot many decisions. For example, what happens in a daily life? We get ahead, we go for shopping. When we have lot many options available with us, we are unable to decide because too many options, too many alternatives. Evaluating those alternatives end up nowhere, and we even end up making wrong decisions. This was for daily life. Then when it comes to team goals, what happens is like we come across a situation, we discuss over the daily problems, we discuss over the situations to move ahead. We cut down lot many factors. When we cut down lot many factors, when we jot down lot many factors, those factors leads to a situation wherein we are unable to decide. Again, up mental paralysis as in हम कुछ नहीं कर सकते. Then again, a tough decision making, it leads to a tough decision making because individual overthinks about task solutions rather than actions happening. When we have lot many options, results or actions do not take place. The outcome is that we get jeopardized. This happens even with the situations of securities. It is more applicable when the consumer decision making, as already discussed with you. Then what happens? How analysis paralysis hampers growth? Yes, it hampers growth because it leads to a farewell to the creativity. Why? Reason being, this is a situation wherein we are at a level जब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने mind को use कर सकते हैं for evaluating alternatives. But what happens जब हम decision ले नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर एक mental सिनेरियो आ जाता है या मेंटल ट्रॉमा आ जाता है जहाँ पे हम अपनी इनएबिलिटी को समझने लगते हैं किसी डिसीजन को लेकर के, विच इवेंचुअली लीड्स टू रिडक्शन इन परफॉर्मेंस. क्योंकि जब हमारे डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं तो परफॉर्मेंस इवेंचुअली ख़राब हो रही है. और फिर उसका सिनेरियो ये आता है कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है या हैप्पीनेस का सिनेरियो है वो इवेंचुअली कम होता जाता है. देन कम्स अ सिचुएशन हाउ वी कैन overcome this or we can avoid analysis paralysis. Yes, this can be done.
नैरो डाउन द फील्ड, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हम उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, हम अपने स्कोप को कम कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को कम कर सकते हैं, जो इररेलेवेंट ऑप्शंस है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। वी नीड टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज क्यों ज़रूरी है? रीज़न बीइंग, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होंगी, बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ हैं डिस्कस करने के लिए, हम अगर उन इंफॉर्मेशंस पे जो वेस्टेड है या जिसके ऊपर हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपना टाइम उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो क्या होता है कि हम स्टक हो जाते हैं। तो वी नीड टू इवेंचुअली इवेलुएट दोज ऑप्शंस कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड सो दैट वी आर एबल टू मूव अहेड। देन कम्स अ सिचुएशंस जहाँ पे divide and conquer means it's a paradigm. We have to be helpful when it comes to breaking a problem. हम problems को divide करें, break करें, सिंपलर फॉर्म में करें। जब हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक क्या होता है, जब हम फ्रैगमेंट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो फ्रैगमेंट हो जाएंगे, तो हम छोटे छोटे ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं ताकि मेरे पास बहुत ज़्यादा या हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे तो इवेंचुअली हमारे डिसीजंस ईजी होंगे। एलिमिनेट द बैड ऑप्शंस। एज सेड, जो अनवांटेड हैं, ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, जो हमारे इस डिसीजन मेकिंग में हैम्पर नहीं करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे, हम उनको इवेंचुअली हटा देंगे। एंड व्हाट एल्स वी कैन डू इज we can ask for advice of our peers, advice of our friends, advice of our juniors, advice of our colleagues, so that we are able to move ahead. To conclude, I would say nobody is perfect in this world, be it me or be it you. In majority of the cases, one simple decision can make your life or can waste your life or spoil your life. Decision must always be differentiated or be made on the basis of the importance. Do remember yourself. Do remember, always ask and question important things. Do make decisions that are very important so that we are able to move ahead. Thank you.